This is solution of section A. Section A, sample paper 202526 issued by CBSE Class 10 Mathematics for the year 2025-26. And question number 1 is on your screen. I already have given you, I already have shared you the solution of basic for the sample paper. So this is question number 1. If the LCM of A, B, C, that is 3780, then what is the value of X? देखिए, how to find out the LCM? We take the highest power of the prime factor here, C. 2 को देखिए, what is the highest power? 2 power 2, 2 power 2, and 2 raised to the power 2. So 2 raised to the power is the highest power. Now we go for the prime factor 3, 3 raised to the power X, 3 raised to the power 1, 3 raised to the power 1. So we don't know the value of X, so we have to take here 3 raised to the power X. And now we take the power of 5. Here it is 5 is not there. 5 raised to the power 1. So we have to take here 5 raised to the power 1. That is the highest power. And for 7 raised to the power 1 means 7 is the highest power of 7. That will be the LCM, but it is already given that this is equal to 3780. Now you calculate it for X. 2057 is 35, 4 is 140 into 3 raised to the power X, that is 3780. 3 raised to the power X is equal to 3780 upon 140. So that will be 27. So we can write 27 can be written as 3 raised to the power 3. So we can say if you compare 3 raised to the power 3, so 3 raised to the power X will be equal to 3. The value of X will be equal to 3. So C is the correct option. The shortest distance in units of the point 2, 3 from y-axis is. y-axis से ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका y-axis से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? देखिए, वी हैव टू विजुलाइज इट. ये हमने ग्राफ पेपर लिया and we have plotted the point 2, 3 means x is 2 and y is 3. So distance from the y-axis, this is y-axis. So distance from y-axis is this, and this equal to this, that is 2. That is equal to x coordinate. So the answer will be 2 unit. अगर यही क्वेश्चन होता कि from x axis, so this is x axis and the distance is this and this is equal to this is 3. So the answer here is as shortest distance of point 2, 3 to y-axis is equal to x coordinate, and that x coordinate is 2. So two is correct answer. If the lines 3x plus 2ky is equal to 2 and 2x plus 5y plus 1 is equal to 0 are not parallel, then what is the value of k here? Student, please note, linear equations into variable always represent a straight line. कोई भी linear equation into variable हो,
वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे टू लीनियर इक्वेशंस हैं साइमल्टेनियसली, तो ये दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे, वन फॉर दिस लीनियर इक्वेशन एंड अदर फॉर दिस लीनियर इक्वेशन। द क्वेश्चन इज that there are three possibilities that two lines can intersect exactly at one point, that two lines can be means coincident lines, and third possibility the two lines are parallel. लाइन्स आर कंसिस्टेंट इन इनकंसिस्टेंसी हियर। मैं पूरा डिटेल में आपसे इस चैप्टर को बता देता हूं, क्योंकि इनमें से एक तरह का क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए, ये दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसमें दो पॉसिबिलिटीज बनती है। ये कंसिस्टेंट हो सकता है, और कंसिस्टेंस में दो पॉसिबिलिटीज बनती है। फर्स्ट इज कंसिस्टेंट एंड अदर हियर इज इनकंसिस्टेंट। Linear equation in two variables are consistent if they give a unique solution or they give infinite many solution. If they give unique solution, then the condition is a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. But if there are infinitely many solutions, then a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. Equation represent coincident lines and equation represent intersecting line। दो पॉसिबिलिटीज हुई यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नोट पैरेलल है। तो पहले हम व्हाट इज द कंडीशन फॉर द पैरेलल लाइंस और इनकंसिस्टेंसी। Inconsistent system of equation has no solution, means the two lines will be parallel, and the condition is a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 and not equal to c1 upon c2। आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में आपको गिवन है equation represent parallel or disjoint line, right? But the question is not for the parallel lines, it is for the not parallel lines। parallel line नहीं होना चाहिए। उसके लिए देखिए कंडीशन है a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2, राइट? तो क्या करेंगे इसके लिए? a1 upon a2 means 3 upon 2 should not be equal to b1 upon b2, 2k upon 5. So what is the value of k? So the value should not be equal to 15 upon 4. I think the answer is very much clear to you now. The value is not equal to, should not be equal to 15 upon 4. A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle if AB is equal to 7 centimeter, CD is 4 centimeter, and AD is 3 centimeter. Then what is the length of the side AB? We have to draw a quadrilateral. First, we have to visualize it. And in this case, we know that the sum of opposite sides will be equal, means AB plus CD will be equal to AD plus BC। ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में भी है। So now it is very much clear, 3 plus 7, 10 centimeter, and the sum of these two opposite side AB plus CD will also be equal to 10 centimeter. So this is 4 centimeter, so this will be 6 centimeter। AB plus CD should be equal to AD plus BC। ऐसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। So AB plus CD is 4 centimeter is equal to AD is 3 centimeter, BC is 7 centimeter. So AB will be 6 centimeter. So 6 centimeter is the correct option। Sec theta plus tan theta is equal to x. Then what is the value of sec theta minus tan theta? We have the identity, see, sec square theta minus tan square theta is equal to 1. As 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, so sec square theta minus tan square theta is equal to 1.
Factorize left side, factorize x square minus y square is equal to x plus y, x minus y. So sec square theta minus tan square theta is sec theta minus tan theta multiplied by sec theta plus tan theta. So sec theta minus tan theta is equal to 1 upon sec theta plus tan theta. But we know sec theta plus tan theta is given x. So in place of sec theta plus tan theta, you write x. So which is correct option? So D is the correct option. Which of the following is not a quadratic equation? An equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c are real numbers and the coefficient of x square is not 0, that is said to be quadratic equation. ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर हो, मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 ना हो, उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. यहां पे मैं डायरेक्टली डी पार्ट ले रहा हूं. देखिए, I have taken d part here. On further simplification, we get x square plus 3x plus 2, that is equal to x square plus 2x plus 3. x स्क्वायर को जब लेफ्ट साइड साइड लाएंगे तो ये बन जाएगा x minus 1 is equal to 0. Here the highest power is not x square, that is, and this is the highest power is 1, so this is linear equation. और जब ये linear equation है तो ये quadratic equation नहीं है. That is why D is the correct option. Very interesting question. Given below is the picture of Olympic rings made by taking 5 congruent circles of radius 1 centimeter. देखिए, ये जो circles है उनका सबका radius 1 centimeter है, and here are five congruent rings है. Congruent circles are the circles having the same radii. वो circles जिनका radius equal होता है उनको हम congruent circles कहते हैं. लेकिन कितने circles हैं? 5 circles हैं. In such a way that the chord formed by joining the point of intersection of two circles is also of 1 centimeter. इनका जो रेडियस है, लेंथ, वो भी 1 सेंटीमीटर है, और इसका जो लेंथ ऑफ कोड है दैट इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर. Total area of the all the dotted region, assuming the thickness of the region to be negligible, is what? देखिए, हमें इसका ये पूरा एक जो डॉटेड लाइन है, ये प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन सब का टोटल एरिया फाइंड आउट करना होगा. हम देखते हैं जो रेड पोर्शन मैंने बना रखा है दैट इज सेक्टर, सॉरी, सेगमेंट ऑफ द सर्कल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, हम इसको विजुलाइज करते हैं. मैंने एक सेंटर से ज्वाइन किया इसको. देखिए, इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर और द लेंथ ऑफ कोड इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर. दिस इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर. So OAB is an equilateral triangle because all sides are equal. And when triangle is equilateral, each angle is 60 degree. That is why angle at the center is also 60 degree. ये जो एंगल है 60 डिग्री है. हमें सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए रेडियस चाहिए सर्कल का, और हमें एंगल एट द सेंटर चाहिए. एंगल एट द सेंटर इज 60 डिग्री है और रेडियस इसका 1 सेंटीमीटर है. So OAB is an equilateral triangle. So angle O means the angle theta is 60 degree. अब आप देखिए कितने सेक्टर हैं ये. 1 2. पहले हम एक सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करते हैं. दिस वन एरिया, सॉरी, सेगमेंट का एरिया ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज गिवन बाय
पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा। यहां पे हमें पाई का वैल्यू पाई ही लेना है। इन प्लेस ऑफ रेडियस यू पुट 1 सेंटीमीटर, इन प्लेस ऑफ थीटा यू पुट 60। साइन 60 इज इक्वल टू √3/2। So pi into 1 into 1 into 60 upon 360 minus 1 upon 2 into 1 into 1 into √3 is √60 is equal to √3/2. Further simplify करिए, so that will be equal to pi by 6 minus √3/4. यहां पे हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो एरिया है, ये ये एक सेक्टर का है। आप इसका मान लीजिए ये सेक्टर है, सॉरी सेगमेंट है ये वाला। अब ये देखिए दो हो गए, अगर इसको इसको ज्वाइन कर दूंगा, ये दिस इज 3 एंड दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6, 7 एंड 8। टोटल जिनका जो एरिया है वो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर से देखिए क्यों हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा। वन, टू, सेम एरिया है इनका। 3, 4, कोड के एक ऊपर एक नीचे, 5, 6, 7, 8, तो इसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट आंसर। So the area of the dotted region will be 8 times pi by 6 minus √3/4 centimeter square, and the answer is this. पहले एक का आप निकालिए सेक्टर का और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन।